Hello everyone, welcome to my channel. My name is Pmukku. Today we are going to discuss how Trump failed to stop two major wars in 2025. Iran-Israel War and Russia-Ukraine War. Introduction. Donald Trump returned to the U.S. presidency in early 2025, promising to restore American dominance and global stability. He famously claimed he could end the wars quickly, especially the Russia-Ukraine conflict and tensions in the Middle East. However, by mid-2025, both conflicts have escalated, not de-escalated, under his leadership. Instead of brokering peace, Trump's actions have resulted in confused ceasefire narratives, alienated allies, empowered adversaries. This report dissects his failures in stopping the wars and the consequences for global security. Trump's ceasefire narrative, a political illusion. 1. False claims of ceasefire efforts. Iran-Israel. During the June 2025 G7 summit, French President Emmanuel Macron stated Trump left early to pursue a ceasefire between Israel and Iran. Trump denied this publicly, saying, "No ceasefire. I want a real end, not a temporary fix." However, he provided no evidence of a diplomatic plan. This contradiction fueled confusion. 2. No real diplomatic action. No peace talks, no special envoy, no back-channel diplomacy. Neither Iran nor Israel confirmed any communication initiated by Trump. Public statements lacked actionable steps, only vague threats and chest-thumping. 3. Public confusion. Trump's own team didn't clarify the U.S. position. Allies were left guessing. Media reports contradicted one another, mostly due to Trump's own misdirection. How he failed to stop the Iran-Israel War. 1. One-sided support for Israel. Trump doubled down on unwavering support for Netanyahu's government, justified Israeli airstrikes in Gaza, Syria, and Iran-backed positions. Refused to pressure Israel to show restraint. Dismissed Arab world concerns as pro-terrorist propaganda. This hardline support gave Israel the green light to escalate without consequence. 2. No engagement with Iran. Trump called Iranian leaders terrorists and ruled out any talks unless they fully surrendered on nuclear ambitions. He cancelled diplomatic channels previously used by the U.S. State Department. Iranian officials called his stance insane, unrealistic, and unserious. Without dialogue, de-escalation was impossible. 3. Isolation on the global stage. Trump skipped key G7 sessions and ignored UN calls for mediation. Most European countries started pushing their own peace efforts without U.S. support. Result: America lost its role as global mediator. How he failed to stop the Russia-Ukraine War. 1. Admiration for Putin. Trump often praised Putin's leadership and military strategy, blamed Ukraine and NATO expansion for provoking Russia, questioned U.S. intelligence on Russian war crimes. This rhetoric emboldened Putin and weakened Ukraine's moral leverage. 2. Attacks on NATO. Called NATO obsolete freeloaders. Threatened to withdraw U.S. from Article 5, Mutual Defense Clause. Skipped major NATO crisis summits. This fractured NATO unity at a critical moment, reducing the alliance's deterrent power. 3. No peace plan. Despite claiming he could end the war in 24 hours, Trump offered no concrete plan. Refused to send any diplomatic delegation to Kyiv or Moscow. Undermined bipartisan congressional peace proposals. Trump used the war as a political weapon, not a policy priority. 4. Blocked military aid to Ukraine. Froze delivery of artillery, anti-aircraft, and intelligence support. Suggested Ukraine should cede territory to Russia to save lives. This demoralized Ukraine and emboldened Russia's demands. 5. Political exploitation. Repeatedly called Ukrainian President Zelensky ungrateful. Framed aid as wasting taxpayer money to win domestic votes. Never engaged in peacebuilding, only campaign messaging. Consequences of Trump's failures. 1. Global power vacuum. With the U.S. stepping back, powers like China, Russia, and Iran have taken more prominent roles in shaping global narratives. 2. Loss of trust in American leadership. Allies no longer rely on the U.S. for peacekeeping or global stability. European and Middle Eastern nations are forming independent security and diplomacy networks. 3. Prolonged wars, more casualties. Iran-Israel. Continued airstrikes, thousands dead, rising risk of regional war. Ukraine-Russia. Frontlines stall, but civilian deaths and destruction increase. Conclusion: Trump's failures to stop the wars lie not in inability, but in unwillingness to lead. Instead of engaging in real diplomacy, leading global coalitions, or supporting rules-based order, Trump chose ego-driven decisions.
one-sided loyalty to Netanyahu and Putin, political optics over meaningful peace. The result: two raging wars, weakened U.S. credibility, and a more dangerous world. Here is how India exposed the Trump on the peace deal with Pakistan. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। Thanks for watching my channel. Please subscribe, share, like and comment.